Hello friends, Namaskar dosto. Very good morning and welcome to another video edition of Forex and Commodity Market with SD. I'm SD Shananda Das. I'm a foreign exchange and commodity market professional with a multi-asset trading and investing as my specialization. तो ये वीडियो मैं जल्दी छोटा वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ। मैं बहुत बिजी था लेटली। मेरा 2 दिन का लाइव मैराथन चल रहा है विच इज फोकस्ड ऑन दिस FOMC. सो टुडे आई हैव अ फुल डे marathon with the learners about different markets and this fountain of gold का trading strategy. So let me quickly share what I think क्योंकि कई सारे important events पास हो चुके हैं. One of them is Federal Reserve. Federal Reserve कल interest rate announce किया and it was broadly जैसा expectation था कि it did not do neither cut nor hike. But that's not all. Fed कल projection material release किया. FOMC projection materials, FOMC projections. So we don't want December, we want yesterday's is FOMC projections. So March 2024 FOMC projection material हर quarterly meeting में release होता है. So this is the summary of projection. यहाँ पे जो broadly दिखा, they have जो core inflation था, they have heightened it, core inflation. Unemployment जो था December was 4.1, so marginal decline in unemployment. And real GDP growth को उन्होंने significant up move दिया from December projection of 1.4. So Fed project कर रहा है higher growth, marginally lower unemployment rate and a little bit of higher inflation. तो पहला जो this forecast, this was broadly not very dollar positive नहीं था initially because लास्ट कुछ जो डेटा आए थे दैट वाज जनवरी एंड फरवरी, उसमें इन्फ्लेशन डेटा रिलेटिवली मच स्ट्रॉन्गर देन एंटिसिपेटेड था. सो मार्केट थोड़ा हॉकिश एक्सपेक्ट कर रहा था फेडरल रिजर्व से. तो मूड वैसे बना हुआ था. तो जैसे ही फेड ने फिर से कंफर्म किया नहीं, दे आर लुकिंग फॉर broadly three rate cuts this year, still that market took as a dovish hint. But थोड़े देर बाद as it is expected कि Fed will keep rates for longer, मार्केट में हम लोग एक जो बॉन्ड मार्केट में we saw a bear steepening of the yield curve marginal टाइम के लिए. और तभी ने पावेल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बॉम्ब फेंका कि we are done for the rate has peaked for this hiking cycle and very likely next move will be rate cuts. और वो नॉट नेसेसरली बट पॉसिबली इंटरिम मीटिंग मतलब मई का जो मीटिंग है उसमें भी सरप्राइज रेट कट आ सकता है जो करंटली मार्केट इज प्रोजेक्टिंग अबाउट जून. सो अगर एफओएमसी का प्रोबेबिलिटी देखा जाए, लेट्स लुक एट द प्रोबेबिलिटीज फ्रॉम दिस फेड वॉच टूल. सो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी मैं देख रहा हूं दैट इज मोर टुवर्ड्स द जून प्रोबेबिलिटी. So June probability yesterday before the Fed, market was pricing 65% chance that there will be a rate cut in June. Now market is pricing more or less with almost 75% chance that there will be at least one rate cut by June. So that means the meeting has broadly been dovish. So this is not very dollar positive or interest rate positive event था. तो लेट मी डिस्कस माय ट्रेड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रेड्स मैं लेके गया था, आई हैव टेकन मार्जिनल बहुत ही छोटा पोजीशन यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी एज अ स्टार्टर क्वांटिटी. ऑब्वियसली उसमें लॉस लगने वाले, बट दिस वाज एंटिसिपेटेड. ये बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं था. आई एम यूज्ड टू कि फेड में ऐसा हो ही सकता है. सो दैट्स व्हाई आई डिड द स्टार्टर क्वांटिटी इन यूरो यूएसडी एंड जीबीपी यूएसडी. सो यूरो यूएसडी जो अभी कम बैक हो रहा है, दिस वेरी इंटरेस्टिंग. दैट्स गुड. दैट छोटा फेल से कोई फर्क नहीं पड़ता. इफ यूरो इज ब्रेकिंग अबव दिस लेवल, जो प्रीवियस दिस लेवल 1.0941, इट वुड बी ए गुड रीजन टू स्टार्ट ऑफ विद द फोमो क्वांटिटी. ये जो ट्रेंड हम लोग देख रहे थे डॉलर का सेल ऑफ, मे बी इट हैज वंस अगेन इज कमिंग बैक. अगर ऐसा हुआ देन वी आर लुकिंग एट बिगर ब्रॉड साइड. सिमिलर मेरा जीबीपी यूएसडी में भी ध्यान है, बट जीबीपी यूएसडी दिस इज अ मेजर रेजिस्टेंस 1.285. जब तक उसका ब्रेक नहीं होता आई विल नॉट बी वेरी कंफर्टेबल इन जीबीपी यूएसडी. रैदर जो ट्रेड मुझे अच्छा लग रहा है
that is GBP INR. GBP INR का position देखूं तो this is much better positions. There's likely we need a further breakout, but this is has potential to gain further ground. It is rising from an important level 105.4. I've got a big right now, but I've got a definite max stop loss at least. That means it can go very big. It is coming from very important levels. So GBP INR rather than GBP USD is my focus. USD related volatility hai. INR recently weakness दिखा रहा है. Similar Euro INR did a major comeback. कल ये जो comeback हुआ है candle green, this is beyond our time frame. So 5 बजे इंडियन मार्केट बंद हो जाता है, which is a major problem for an Indian forex trader. But this can go big too. But this is waiting for the major break of 91.15 area. Mountain top का resistance break हो जाएगा and then we will be reaching for further up. JPY INR is मेरा mixed feeling. I don't think it is turning bearish immediately. Jैसा I'm looking for Euro USD, GBP USD long. Honestly speaking, I'm not looking for USD JPY short. JPY it is down. The candle is नीचे है, मतलब correction हो रहा है. But candle का जो maximum stop loss वो भी नीचे भागा है. That means though we are likely to see both sided volatility, market पूछ रहा है कि means the bulls are still not done yet, खत्म नहीं हुआ उनका rally. So I will wait for a break of first of all 151 further. और ये मैं जो position लिया था, this I'll have to partially square off. And मैंने position लेना चालू किया था 105.50.42, almost मेरा break even पे आ गया है. So ये जो है फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर स्टेप इज रिस्क रिडक्शन. सो काफी ज्यादा पोजीशन मैं इसको स्क्वायर ऑफ कर दूंगा. आई विल फुल्ली स्क्वायर ऑफ द यूरो यूएसडी. ये दोनों स्मॉल क्वांटिटी बट विल बी लॉस मेकिंग. आई विल बी लुकिंग फॉर यूरो आईएनआर लॉन्ग, जीबीपी आईएनआर लॉन्ग, and I'll also in future be looking for USD JPY long as well. तो इसमें जो ट्रेड बढ़िया हो सकता है, that is it is giving a correction, एक करेक्शन चल रहा है उसमें, क्योंकि जो जापानीज येन है मॉर्निंग में इट इज स्ट्रॉन्ग, इट इज फॉलो अप हो रहा है जो कल जो मूव हम लोग देखे थे. बट पाउंड येन का अच्छा ब्रेक हुआ है. सो विथ यूरो एंड जीबीपी राइजिंग एंड आई डोंट थिंक यूएसडी जेपीवाई बहुत बड़ा फॉल होने वाला है इमीडिएटली अनलेस यूएस इंटरेस्ट रेट्स गोज फॉर अ बिग ड्रॉप. ऐसा होने वाला नहीं है. सो पाउंड येन एंड यूरो येन थोड़ा पेशेंस के साथ इट कैन फर्दर गो अप. रेड कैप्स दिखा तो पार्शियली आई विल एग्जिट, बट दिस इज स्टिल वेल अबव. मेरा जो लेवल था उससे वे अबव खड़ा है बोथ यूरो येन एंड पाउंड येन. पर यूरो इसमें हम करेक्शन देख रहे हैं लार्जली बिकॉज ऑफ येन स्ट्रॉन्ग हो रहा है जापानीज येन. बट इट्स अ गुड ब्रेकआउट और अभी भी प्राइस करंट प्राइस अभी भी काफी दूर है अवे फ्रॉम मेरा जो लेवल ऑफ ब्रेकआउट एंट्री लेवल वहां से कई दूर है. This is JPY INR. JPY INR एक bearish sign दिया था, but this bearishness is not working. Still वही support पे है. Better to go for do nothing in JPY INR right now. और एक ट्रेड जो मैं लेके गया था that is the XAG USD. मैंने गोल्ड बुक कर लिया था बिकॉज गोल्ड एक येलो बैकग्राउंड आया था विच इज माय प्रॉफिट बुकिंग सिग्नल. आई गॉट मोर इंटरेस्टेड in silver and it is broadly paying off. Silver has given an important breakout. I will look to increase further quantity. ये जो breakout हो रहा है इसको ignore नहीं किया जा सकता. So I will plan to increase silver. मैं silver ETF भी purchase का कुछ दिनों हुआ है. I've started purchasing in silver जब से मेरे वीडियो में मैंने highlight किया about the fundamental factor in silver. Gold has crossed 2200. Gold I have exited. First of all, this is a weekly chart. So gold यहाँ पे जो correction हो रहा था इसमें I have exited after a certain point. There was a full yellow background. I exited, did not want the exposure before Fed. Now the gold is coming back. I'll once again restart. Restart जो कर रहे हैं उसमें since market has moved a bit, तो इसमें मैं FOMO quantity से start up करूंगा
और बाकी दिन कैसा जा रहा है उस पे नजर डालूंगा। ये एक्सचेंज यूएसडी एंड जो गोल्ड एंड सिल्वर दोनों है, दोनों में से आई विल ट्राई टू लुक एट the 125 minutes chart for proper entry and exits. So gold and silver, I'm both bullish. Silver मेरा position already है, I'll be increasing that. Gold में position nil हो चुका था, I'll be once again starting off with gold. नेक्स्ट जो अदर जो ट्रेड्स ब्रॉडली हम लोग देखेंगे, विल बी एबल टू सी वंस द मार्केट ओपन्स अप, बिकॉज द फेड इवेंट इज स्टिल नॉट गेटिंग इम्पैक्टेड हियर। बट हम लोग इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस को देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल what it is telling. Crude oil has been under a correction. इसमें I've exited. We discussed that with yesterday जो क्लास था। नेचुरली एग्जिट, क्योंकि ये अपना लेवल रीच हो चुका था 6941 और उसके बाद ड्रॉप आ रहा है। सो व्हाई नॉट एग्जिट, दिस वाज द लेवल। लेट मी शो यू द कैंडल, एग्जैक्टली इस लेवल के पास गया एंड देन इट स्टार्टेड डाउन मूव, सो व्हाई नॉट स्क्वायर ऑफ। सो नेक्स्ट जो है, मेरा सेल का ध्यान नहीं, बाई का ही ध्यान है विद द अलर्ट। प्राइस एक्शन बुलिश आप प्लेस कर दीजिए, प्राइस एक्शन बुलिश। जब प्राइस एक्शन बुलिश हो जाएगा आई एंटर अगेन। बट ये क्रूड ऑयल का राइज, आई डोंट थिंक ये जो बॉन्ड मार्केट में हम लोग जो मूव देखे, दिस डाउन मूव, ये फुल्ली स्टे करेगा। विल हैव टू कीप अ क्लोज वॉच ऑन द इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट मार्केट इज चेंजिंग, इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशंस इज चेंजिंग and market is once again bear steepening, then once again dollar will start coming back. Especially 30-year interest rate कल despite Federal Reserve का hint, shorter end of the curve has gone down, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि bull steepening. Bull steepening generally is a good for overall, say in the future bull steepening usually finally recession तक पहुंचता है, but बियर स्टीपनिंग से बेहतर होगा इन दिस साइकिल विच इज नॉर्मली वी सी विद द फेड, दैट इज द बुल स्टीपनिंग ऑफ द यील्ड कर्व। सो ब्रॉडली दिस इज द पिक्चर। और इसके साथ साथ जैसे ही इंटरेस्ट रेट ड्रॉप हुआ, वी नो फ्रॉम द इंटर मार्केट रिलेशन द इक्विटीज हैव डन वेल। बट आज मैं इक्विटी का वीडियो नहीं करने वाला हूं। आई हैव टोल्ड यू हाउ आई एम इन्वेस्टेड, आई एम पार्शियली इन S&P 500। जो एक नया इन अपॉर्चुनिटी आई एम लुकिंग एट, दैट इज सिंगापुर। Singapore, you can, if you Singapore and emerging markets. So if you go to EN macro micro ME, and there in the, you can go to the ETF screener and you can look for what ETFs is available. Sometimes there will not be, so यहाँ पे सारा database available नहीं है। MCHI iShares China ETF का डिटेल्स अवेलेबल है। बट ओवरऑल देखा जाए तो सिंगापुर का जो स्टॉक मार्केट इज गेटिंग हॉट। दिस इज अ साइन दैट एशिया कुड बी कमिंग बैक, चाइना कुड बी कमिंग बैक। सो चाइना हम लोगों को एग्जिट करा दिया ओवरऑल, जो पहला पोजीशन था, फिर से हम लोग और एक पोजीशन लिए थे। दिस इज द चाइना कमबैक स्टोरी, गैदर पेस हो रहा है। सो चाइना का जो स्टोरी है नाउ, दिस इज मोर ऑफ बहुत ही स्पेसिफिक जो चाइना मेनलैंड लिस्टेड शेयर्स है उसमें स्पेसिफिक था। अब जो रैली हो रहा है उसको थोड़ा ब्रॉडर रैली दिख रहा है। सो चाइना एंड सिंगापुर and all over Asia is a good comeback story, whereas Nifty is likely to bounce back, but I'm not sure whether the risk mood has come to Nifty. The Nifty has, our Indian stocks have been top performer, और I think उसमें थोड़ा maturity आया है, and the big fund managers are now country rotating जहां पे better opportunities दिख रहे हैं। So ये है broadly trades. All the best from my side and happy trading once again. I'll have to go for my live trading marathon.